Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to start our very first chapter, which is Fundamentals of Computer Networking. So, in this chapter, we will be going to learn about what is computer networking, what are networks. So, let's discuss them in detail in this chapter. The name of our chapter is Fundamentals of Computer Networking, and the topics which we will discuss here are computer network, components of a computer network, types of networks, types of network connection, and protocol. For that, we have an amazing thought, which is education is not preparation for life, education is life. Now we have an activity which says write the names of the following devices, color the ones you have at your home. Now, the first one is a laptop. This is a monitor, then car. Now from all these three devices which you have at your home, you will color that. Let's start. Here is a boy who says, "Hello Kavya, do you know what is computer networking?" And she replies, "I don't know what is computer networking. Can you please tell me about it?" And then he says, "Why not? Computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources." तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन शेयर कर सके एज वेल एज जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सके. टुडे वी शैल लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग. Now, in our daily life, we come across various types of networks such as telephone network, cable network, television network, train network, communication network, bank network, etc. तो नेटवर्क एक ग्राउंड होता है ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ. When we make a network of various devices, the term is said to be networking. जब हम बहुत सारे डिवाइसेस का एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको एक नेटवर्किंग टर्म से डिनोट किया जाता है. The word network refer करता है to the interconnection of various devices to share their resources. Now, computer network क्या होता है? Network means connecting with each other. So computers form network for sharing information and resources. जो computers होते हैं वो एक network बनाते हैं ताकि वो information और resources को share कर सके. Number of computers are and peripheral devices are interconnected. बहुत सारे computers और पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं इन सच अ वे दैट दे कैन शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन और इसको बोला जाता है नेटवर्क. नेटवर्किंग इज मेनली कंसर्न विद द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम. जो वर्ड नेटवर्किंग होता है वो कंसर्न होता है कि कैसे ये जो हमारे नेटवर्क है ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा. कंप्यूटर नेटवर्क एक सेट होता है of computer information का. Computer networking can be considered as a sub-discipline computer science, information technology, and computer engineering. The first working network called ARPANET was created in late 1960s and was funded by US Department of Defense. तो जो गवर्नमेंट रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या किया था? They used to share information at the time when computers were large and difficult to move. We have come a long way today from that basic kind of network. Today's world जो है वो revolve करता है around the internet, which is a network of networks. तो internet क्या है? Network of networks that connect billions of devices across the world. तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एक डिफरेंट नेटवर्क का यूज करती हैं टू कनेक्ट देयर एम्प्लॉयज डिवाइसेस एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, एटसेट्रा. नाउ बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंट नेटवर्क्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इंट्रानेट, इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट. तो इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट एक सेट ऑफ नेटवर्क्स होता है जो मेंटेन किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है बाय सिंगल एंटिटी. It is generally most secure type of network with access to authorized users alone. मतलब ये जो नेटवर्क है इसको सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं. ये यूजुअली एग्जिस्ट करता है बिहाइंड द राउटर इन अ लोकल एरिया नेटवर्क. इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कलेक्शन है बहुत सारे नेटवर्क्स का जो कनेक्टेड हैं बाय राउटर्स एंड लेयर्ड बाय नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर.
तो ये एक ग्लोबल सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है गवर्नमेंट को, रिसर्चर्स को, कॉर्पोरेट्स को एंड पब्लिक इंडिविजुअल कंप्यूटर नेटवर्क्स को। एक्स्ट्रानेट क्या है? ये सिमिलर होता है टू इंट्रानेट बट विथ कनेक्शंस टू पर्टिकुलर एक्सटर्नल नेटवर्क्स। ये जनरली यूज किया जाता है जब भी हमें रिसोर्स शेयरिंग करनी होती है विथ पार्टनर्स, कस्टमर्स या फिर रिमोट एम्प्लॉयज। नाउ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। टू मेक अ कंप्यूटर वर्क हमें टू या टू से ज्यादा कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट होते हैं विद ईच अदर बाय यूजिंग अ मीडिया और केबल। तो व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, जब हम अपने कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कम्युनिकेशन लिंक और केबल वायर, यू बिकम अ नेटवर्क यूजर। आप एक नेटवर्क यूजर बन जाते हो एंड योर कंप्यूटर बिकम्स अ वर्क स्टेशन। तो बेसिकली अगर आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो योर कंप्यूटर इज becomes a workstation. Your workstation has all its local resources जैसे printer and hard drive. So it can also access files जो stored हैं on a file server and make use of other network resources. ये जो network components हैं they can be located within the same building or at the remote location. They can be of any size of computer network. Computer network का कोई भी size हो सकता है. There is no fixed size of a certain computer network. Advantages and disadvantages of a network. So first is advantage of network which is easy to access. Network allow करता है users को कि वो information को access कर सकते हैं from other computers on network. So it also stores information on a central user computer which makes it easy to work and manage files. Next is sharing of files. तो files and data जो होता है they can be shared easily among multiple devices जो help करता है in easy communicating among the organization. Reduce data redundancy, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि डेटा जो है वो सेंट्रली स्टोर होगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो नेटवर्किंग है वो अलाउ करती है पीपल को इन डिफरेंट ऑफिसेस टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर, जो रिड्यूस करता है नीड ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल द यूजर सिस्टम्स टू वन सिस्टम वेयर इट कैन बी मैनेज्ड इन इजी वे। डिसाइड एडवांटेजेस, हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है नेटवर्क की, विच इज द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लूज वेरी क्विकली। एक्सेस जो है किसी भी इंफॉर्मेशन का वो बहुत जल्दी लूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रली शेयर्ड होता है। नाउ कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत हाई होती है। वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ये रिक्वायर करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेटअप। इफ अ कंप्यूटर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन, अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एंटायर सिस्टम वुड बी बिकम यूजलेस। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो मदद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स एंड लेट अस स्टडी अबाउट दैट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर दैट वी यूज रेगुलरली is also called the end node in a networking. नेटवर्किंग के अंदर जो हमारा कंप्यूटर है हम उसको एंड नोड भी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स आर द ओरिजिनेटर ऑफ द नेटवर्क। इट इज द ओरिजिनल नोड जो रिक्वेस्ट करती है डेटा एंड ऑन द अदर हैंड द डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द पर्सनल कंप्यूटर। फिर हमारे को नेक्स्ट में चाहिए होता है केबल्स एंड कनेक्टर्स। तो जो वायर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को या फिर उनके रिसोर्सेज को ऑन अ नेटवर्क एंड दे आर कॉल्ड केबल्स। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ नेटवर्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स का यूज किया जाता है। कनेक्टर को हम यूज करते हैं जब भी हमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को ज्वाइन करना हो। नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विच इज एनआईसी। एनआईसी एक ऐसा डिवाइस होता है जो ज्वाइन करता है केबल को टू अ कंप्यूटर एंड इट इज इंस्टॉल्ड inside a computer. It has a part where we plug the network cable. Next, हब भी एक डिवाइस है जो कंटेन करता है मल्टीपल पोर्ट्स जिसके अंदर हम मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। When a computer transmit data, जब कोई कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट करता है एक हब के थ्रू, तो द हब विल ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स जो इसके साथ अटैच्ड है।
देन वी हैव स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कंटेन करता है मल्टीपल पोर्ट्स टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस टू ईच अदर। अनलाइक हब, स्विच जो है वो डेटा सेंड करेगा टू द डेस्टिनाइड कंप्यूटर ओनली। यानी कि हब में तो ये होता है कि अगर कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो हर एक कनेक्टेड कंप्यूटर के या डिवाइस के पास जाएगा। लेकिन स्विच में क्या होता है, सिर्फ जो हमारा डेस्टिन कंप्यूटर है, मतलब जहां पे हमें भेजना है, वहीं पे वो डेटा ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज राउटर। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो रिसीव करता है डेटा को, एनालाइज करता है और ट्रांसमिट करता है उसको टू अदर नेटवर्क्स। राउटर कनेक्ट करता है एक लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। ये डिटरमाइन करता है कि जो नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट है इन विच द डेटा शुड बी फॉरवर्डेड टूवर्ड दिस डेस्टिनेशन। राउटर वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मोडेम। तो फुल फॉर्म जो है मोडेम की वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम जो होता है वो एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो मदद करता है टू कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर। ये वर्क करता है एज अ सिंगल ट्रांसलेटर बिकॉज ये ट्रांसलेट करता है एक सिग्नल को टू दूसरे सिग्नल में, so the computer and telephone lines can interact with each other. Now we have an activity which says write the full form of these terms. First, NIC, which is Network Interface Card. And then we have modem, which is modulator, demodulator. Now we have types of networks. There are different types of computer networks. Let us study about some common types of them that are generally used. So before that we have a word wireless network, जिसका मतलब होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है that is not connected with any kind of cables. Now first is personal area network यानी कि PAN. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट टाइप होता है ऑफ वायर्ड या फिर वायरलेस नेटवर्क। ये कवर करता है एटलीस्ट अमाउंट ऑफ एरिया। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा। जो पैन का साइज होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 10 to 30 मीटर्स। कुछ एग्जाम्पल है पैन के विच इज ब्लूटूथ, वायरलेस यूएसबी, हार्ड ड्राइव, वायरलेस कैमरा एटसेट्रा। There is a cool fact which says Bluetooth is a wireless technology जिसका हम यूज करते हैं to interconnect mobile phones and computer using short range wireless connection. नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ये एक कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस को लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर सच एज इन अ बिल्डिंग। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क जो होता है ये कवर करता है एरिया अप टू द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर एंड डू नॉट हैव मोर देन 100 कंप्यूटर्स। इसके अंदर 100 कंप्यूटर्स से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो सकते। The various devices in LAN are connected to central device called hub or switch. यानी कि लैन के अंदर जो डिवाइसेस है उनके बीच में एक जो सेंट्रली कनेक्टेड होता है वो कोई हब या स्विच होता है यूजिंग अ केबल। दिस नेटवर्क इज लिमिटेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया सच एज अ क्लासरूम, स्कूल और अ सिंगल बिल्डिंग। Now, campus area network CAN. Campus area network is a LAN या फिर set of connected LANs that is used by government agency, university, corporation or similar organization and is typically a network across a set of buildings that are close to each other and it can range up to 1 kilometer to 5 kilometer. नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये कलेक्शन होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स का जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को। इट इज डिजाइन फॉर अ होम और अ सिटी एंड ये टिपिकली कवर्स करता है एक एरिया जो 5 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर की रेंज में आता है इन डायमीटर। एग्जाम्पल जो होते हैं मैन के दैट आर नेटवर्किंग इन गवर्नमेंट एजेंसीज, एयरपोर्ट्स, लाइब्रेरीज एटसेट्रा। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है जो कवर करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड इट इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। वैन को हम यूज करते हैं या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द कनेक्शन ऑफ सेवरल लैंड्स लिंक्ड टुगेदर टू कवर एन एंटायर सिटी और कंट्री। ये कवर करता है एक एरिया जो रेंज करता है अप टू 1 लाख किलोमीटर। कैपेसिटी टू एक्सपेंड ग्लोबल, एग्जाम्पल्स होते हैं इंटरनेट, एटीएम।
नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन विच आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टू ईच अदर। टोपोलॉजीज कुछ अरेंजमेंट होती है ऑफ दीज नेटवर्क्स जो कनेक्ट करती हैं, कनेक्शन बनाती हैं एलिमेंट्स का, जैसे लिंक्स, नोड्स एक्सेट्रा। टोपोलॉजी रेफर करती है टू कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में। द वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। एंड जो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज हैं दे आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहले आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क है जिसके अंदर हर एक कंप्यूटर या फिर नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड होता है थ्रू अ सेंट्रल केबल बस विच इज अ सिंगल केबल। यानी कि एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे एक सिंगल केबल होती है जिसको यहाँ पे बस बोला जाता है और इससे सारे डिवाइसेस इसी केबल से कनेक्टेड होते हैं। Data sent from a node are passed on to the bus and hence are transmitted to the length of bus in both directions. This means जो data है वो receive हो जाएगा by any of the nodes connected to the bus. इसके advantages होती हैं जैसे it is very easy to set up and cost effective, useful होता है in small networks, it is easy to expand by connecting two cables. Disadvantages होती है that the whole network fails अगर केबल फेल हो जाती है तो, बिकॉज जो डेटा है वो केबल ही ट्रांसफर कर रही होती है। ये स्लोअर होता है एज कंपेयर टू द अदर टोपोलॉजी। सेकेंड हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे हर एक जो नोड होती है वो कनेक्टेड होती है टू टू अदर डिवाइसेस। जैसे अगर हम इस वाली नोड को कंसीडर करें तो ये इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। ये वाली नोड इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो इसके अंदर जो हर एक नोड है उसके टू connected devices होते हैं on either side as shown in the figure. The nodes connected with each other thus form a ring. जो nodes होती हैं वो connect होके एक ring form करती हैं। The link in a ring topology is undirectional. जो link है इनके बीच का वो undirectional है। Thus जो data है that can be transmitted in one direction only, clockwise या फिर anti-clockwise. नाउ इसके एडवांटेजेस है दैट देयर इज नो सेंट्रल साइट कंप्यूटर सिस्टम या फिर इट इज लो कॉस्ट टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। डिसएडवांटेजेस है इसकी दैट द फेलियर ऑफ वन नोड अफेक्ट कर देगी होल नेटवर्क को एंड ट्रबल शूटिंग इज नॉट सिंपल इन रिंग टोपोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग वी हैव इन वर्ड विच इज ट्रबल शूटिंग। एक प्रोसेस होता है ऑफ डायग्नोसिंग एंड सॉल्विंग कंप्यूटर एरर्स या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स। नाउ स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करता है टू अ स्विच बाय इट्स ओन केबल। तो स्विच जो है वो फॉरवर्ड करेगा डेटा को टूवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये कंट्रोल करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेजेस हैं दैट न्यू डिवाइसेस जो है वो इसमें इजीली ऐड ऑन हो सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, कि हर एक डिवाइस जो है वो अपने ही केबल से कनेक्टेड होता है। ये इजी है टू सेटअप एंड मॉडिफाई। इट इज मोर रिलायबल देन बस टोपोलॉजी बिकॉज फेलियर ऑफ वन नोड जो है वो दूसरे डिवाइसेस को अफेक्ट नहीं करेगा इन दिस नेटवर्क। इसके डिसएडवांटेजेस है दैट अगर हब जो है सेंटर में, ये जो हब है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये फेल हो जाता है तो एंटायर जो हमारा नेटवर्क है वो स्टॉप हो जाएगा बिकॉज सारे जो लिंक्ड नोड्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द हब एंड इट इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो डिफाइन करता है लैंग्वेज को दैट अ डिवाइस कैन यूज टू कम्युनिकेट। रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस उसको बोला जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो देयर आर थ्री मेन प्रोटोकॉल्स। सबसे पहला होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज आईपी। ये जो प्रोटोकॉल है इसके थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। तो ऑन द इंटरनेट ईच कंप्यूटर जो है उसका कुछ आईपी एड्रेस होगा विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो आइडेंटिफाई करता है द कंप्यूटर फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स। व्हेन यूजर सेंड और रिसीव करेगा मैसेजेस को, द मैसेज डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स दैट कंटेन बोथ सेंडर एंड रिसीवर इंटरनेट एड्रेसेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिलीवर करता है मैसेज टू बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी। इट इज द अदर प्रोटोकॉल जो पुट करती है पैकेट बैक टू द सिस्टम। देन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज एचटीटीपी। एक सेट ऑफ रूल्स है फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। इफ वी ओपन द वेब ब्राउजर, अगर हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं तो इट मीन्स वी आर यूजिंग एचटीटीपी। लेट्स रिवाइज द चैप्टर।
Computer network is a system in which computers are connected to share information and resources. Modem is a network hardware device that helps to convert signals from one computer network to another. लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन एक कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर एंड डिवाइसेस लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर सच एज इन अ बिल्डिंग. कैंपस एरिया नेटवर्क होता है कैन. ये एक ऐसा नेटवर्क है दैट कैन बी मेड टू इंटरकनेक्ट टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड एरिया. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स दैट आर लोकेटेड इन द सेम एरिया लाइक अ टाउन और सिटी. बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल बस विच इज अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस केबल. एंड स्टार टोपोलॉजी के अंदर हर एक जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होता है बाय स्विच बाय इट्स ओन केबल. लेट्स डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट इज darken the correct option in OMR sheet. We can exchange information all over the world using internet. So C option. The second one is which of the following type of network covers a range up to 10 to 30 meters? PAN. Option C. Then in which of the following is not an example of PAN? Hub. Again option C. Troubleshooting is not simple in dash topology. So it is not simple in ring topology. Option. It is slower as compared to other topologies. Bus topology, which is option A. Now, next is fill in the blanks. Dash is a set of network that is maintained and controlled by a single entity. It is intranet. Dash is a device that joins a cable to a computer. Hub. In dash topology, each computer is connected to the switch by its own cable. Star. Dash is telecommunication network. MAN. Dash is a device that joins two or more computers. Connector. Now, let's do true false. Computers are not necessary to create a network. False. CAN is designed for a home or a city. False. We open the web browser, it means we are using HTTP. True. The router helps to convert signals from one computer network to another. True. The link in a ring topology is unidirectional. True. So students, this was your complete chapter about different computer networks. I hope it is clear to you. Do revise it again at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.